अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट न्यूरोसाइंस रिसर्च स्टूडेंट हूँ। मैं पीएचडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से। मैंने अपना अंडरग्रेड न्यूरोसाइंस में किया यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से। मैंने अपना मास्टर्स किया वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल न्यूरोसाइंस में। एंड करंटली आई एम डूइंग पीएचडी एज मेंशन्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम। और इस सेशन का पर्पस ये है कि हमने न्यूरोसाइंस को रिसर्च पर्सपेक्टिव के थ्रू पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में न्यूरोलॉजी को ऑलरेडी परस्यू किया जा लोग कर रहे हैं, और एज अ रेजिडेंसी भी यूएस में प्लैब के थ्रू, यूके में एंड इन वेरियस कंट्रीज लोग परस्यू कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज, आर वी गुड इनफ इन रिसर्च? ठीक है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, दैट व्हाई डू वी लैग बिहाइंड इन रिसर्च इन पाकिस्तान, या व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। तो यही हम आज डिस्कस करेंगे, और मैं बताऊंगा कि हम किस तरह अपना जो न्यूरो साइंस कोर्स है वो इंट्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान में, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके जरिए आप क्या सीख सकते हैं, और आपके आगे जिंदगी में क्या फवायद होंगे। तो वैसे करंटली मेरी जो रिसर्च है वो एनएमडीए रिसेप्टर्स पे है। एनएमडीए रिसेप्टर्स, ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं। अभी तक दुनिया में सिर्फ एक ड्रग अप्रूव्ड है बाय एफडीए, जिसको हम मेमेंटीन कहते हैं। वो एनएमडीए रिसेप्टर्स को टारगेट करता है, उन्हें इनहिबिट करता है, उनकी एक्टिविटी को कम करता है। मैं उसके मुतबादिल में एक ड्रग है हार्मोनिन, उस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मल्टी लैगेंड ड्रग है। वो एस्टल कोलिन जो कि अल्जाइमर्स में मुतासर होता है उसको भी टारगेट करेगा, और उसके अलावा वो एनएमडीए की जो एक्साइटोटॉक्सिसिटी है, वो जो टॉक्सिसिटी हो जाती है उसकी ओवर स्टिमुलेशन की वजह से, उसको भी कंट्रोल करेगा। और हम रैट क्लोन्स, एनएमडीए रिसेप्टर्स और ह्यूमन क्लोन्स को कंपेयर कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को। तो ये मेरी रिसर्च है। मेरे साथ है आज डॉक्टर एहसन सज्जाद, जो कि हाउस ऑफिसर है और फाउंडेशन ईयर 1 में है। ठीक है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीबीएस किया है। एंड टुगेदर विद एहसन, लुइस हैज अकम्पनीड अस, and he is studying at University of Cambridge doing his PhD in cancer studies, if Luis, I'm not wrong. So Luis hails from Costa Rica and a very dear friend of mine, and we really thank Luis for joining us and giving us time. So I would just start right from Luis, as the topic is introducing neuroscience through research perspective in Pakistan. How do you think, Luis, research is different than pursuing a clinical degree, and how you got into research rather than clinical degree? Yeah, well, thank you, Abdul, for the invitation, and thank you everyone for joining this meeting. As Abdul said, Luis, I'm from Costa Rica. I'm a biologist. I also did my master's in genetics and molecular biology. Now I'm studying at the University of Cambridge doing my PhD in medical sciences, focused on cancer research, especially brain cancer. So I'm also into neuroscience. To answer this question, I would say that I would basically need to go back to my personal background, because I started in med school. So I wanted to be a physician. But then I realized that most of my professors were biologists in biochemistry, physiology, neuroscience, genetics. So I decided that I wanted to do research, because I wanted to contribute on a different level. So I studied biology I left med school and I studied biology. I think that research is essential to find the answers that we don't have at the clinical level. So, for example, if you open your book, let's say biochemistry, let's say physiology, let's say genetics, neuroscience, at the end of each chapter, you will find all the references. So that book was based on those references, and most of them are scientific articles or scientific papers that were written by scientists doing research instead of, clinical practice. So that means that what we learn in med school is based
on the research of other people that are also practicing medicine, but on a different level. So research is basically the way you practice medicine, not at the clinical level, but at the laboratory or fundamental level. So either you want to solve one question, or you can find answers to things that are unknown, filling gaps in the knowledge, or changing the way that a disease is treated. So basically, the aim of research is diagnose or have a better diagnosis of some diseases, have better treatments, and basically have better prognosis. So in my field, for example, in cancer, if I was an oncologist, I would basically use the current drugs that we have. But as a researcher, I'm trying to find new drugs. So that's the difference, right? I'm not treating patients, but with my research, eventually, a lot of patients can be treated if we get these new drugs into the clinic. So in terms of neuroscience, I think that research is really important because the brain is the most complex organ in our body, and we still have a lot of questions that haven't been solved. So at the clinical level, unfortunately, a lot of neurodegenerative diseases are incurable. So I actually started my career studying neurodegenerative diseases instead of cancer. And the problem is those diseases have no cure. So if you are a neurologist, you are going to diagnose the patient, but you won't cure the patient, unfortunately. So we need research to try to find three things: better ways to diagnose these patients, better ways to treat these patients, and even ways to try to avoid the disease would be prevention. So that's the key of research. So basically, we treat or focus on diseases and not specifically on patients. So yeah, thank you, Luis, for everything. Yeah, that's exactly what's the purpose of this talk today. That how research in physio, research in biochem, research in biology, research in molecular biology, research in neuroscience, doesn't matter, cancer, and everything, how it can refine like the precision in clinical diagnosis and everything. And you very well explained that. So that's the purpose of this event as well. And yeah, I would like to have some verdict from Dr. Ahsan Sajjad as well, that as he went through a medical school in Pakistan and how he thinks that we lack in research and how it could be overcome, and what are the, I mean, what exactly is going through the minds of students when they're pursuing everything in med school, and what's the gap and why can't they pursue like medicine in Pakistan? So yeah, first of all, thank you very much, Abdul Rehman, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और पाकिस्तान के जो हैं अंडर ग्रेड्स हैं उनमें न्यूरो साइंस और रिसर्च की अवेयरनेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. Secondly, as far as my academics and whole journey of MBBS is concerned, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था एज अ स्टूडेंट, अंडरग्रेड स्टूडेंट, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है लाइक अदर स्टूडेंट्स के हमने जी अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स क्लियर करने हैं और आगे बढ़ जाना. एज फार एज अनदर थिंग इज कंसर्न कि पाकिस्तान में रिसर्च का और पाकिस्तान में एविडेंस बेस्ड एनालिसिस का कितना रुझान है, ये बहुत कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितने भी हमारी लेट्स से प्रैक्टिस है, वो सारी की सारी एविडेंट है फॉलो अप्स पे, राइट. वी डोंट हैव एनी रिसोर्सेज कि हम जो है वो देखें कि क्या अल्टरेशन आई है, लेट्स से मोलेकुलर लेवल पे अगर हम बात करें, क्या बेहतरी आई है, कितना फॉलो अप उस पे है, इतना नहीं है.
So that is why neuroscience में research का पाकिस्तान में जो रुझान कम है, इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो आपने एक और सवाल पूछा कि ये जो एक और रुझान है, आई थिंक किसी का माइक ऑन है, ये एक और रुझान है कि यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, या जो डॉक्टर्स जो है वो वेस्ट में जाके, फॉरेन कंट्रीज में जाके जॉब्स सिक्योर कर रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे हमारे मुल्क में जो एविडेंस बेस्ड एनालिसिस है या फॉलो अप जो होता है रिसर्च बेस्ड, वो बहुत लिमिटेड है। टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट न्यूरोसाइंस, रिसर्च पाकिस्तान में न्यूरोसाइंस पे जो है वो रिसर्च पे जो काम हो रहा है या जो जर्नल्स हैं वो बहुत कम है मिकदार में, अमाउंट में। और अगर हो भी रहा है तो वो बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। लाइक कराची में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची या फिर डॉ यूनिवर्सिटी, उसमें रिसर्च बेस्ड काम हो रहा है न्यूरोसाइंस पे, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन प्रॉफिट सोसाइटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक आधी एक दो हैं, वो काम कर रही हैं। सो एक्चुअली जो मसला है हमारा, एक्चुअली जो लैगिंग है, अगर किसी का माइक ऑन है तो काइंडली वो म्यूट कर दें ताकि आसानी हो सबको सुनने में। थैंक यू। प्लीज हसन गो अहेड। एक्चुअल जो लैगिंग है वो रिसर्च की ही है, नॉट ओनली इन जस्ट न्यूरोसाइंस बट इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही कमी रही है एंड अल्लाह करे कि ये आगे फ्यूचर में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रिसर्च स्पेशली न्यूरोसाइंस जो है वो पाकिस्तान में इनकलकेट की जाए, एक माइंडसेट बनाया जाए हमारी प्रैक्टिस का एज अ फिजिशियंस। अभी मोहतरम जनाब लुइस साहब भी यही कह रहे थे कि यहाँ पे जो रुझान है वो फिजिशियंस का यही होता है कि हाँ फर्स्ट लेवल ड्रग्स दे दी, फर्क पड़ा, ठीक, फॉलो अप पे आए ना आए पेशेंट, वो फिजिशियन चेंज कर लेता है। वी डोंट हैव स्ट्रिक्ट फॉलो अप्स, वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड। तो उसमें अगर रिसर्च का अमलगम हो जाएगा फॉलो अप्स में फॉर फिजिशियंस लाइक अस एज वेल, तो बहुत बेहतर सिचुएशन हो जाएगी ऑब्वियसली। थैंक यू हसन फॉर योर वर्डिक्ट एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि एक ऐसा पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है जो कि स्टूडेंट खुद एक 5 साल या 6 साल उस जिंदगी से गुजरा है, वो बेहतर हमें उसकी अक्कासी करके बता सकता है कि किस तरह हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह गैप है। सो एज we really thank Luis because he joined us. He gave us time out of his tough lab routine, because I know I'm working lab as well and how it goes. So Luis, just a quick question and last question, and then we'll take your leave. So how do you think, what steps could be taken, like in a country like Pakistan, where people are passionate about medicine, people are passionate about neuroscience, what steps could be taken to like kind of convince people towards research? And considering that there's not much employment if you're going for a research degree in Pakistan, and to be honest, I'm not sure if someone like some of the unis offer any kind of research courses as well. So what do you think, what steps could be taken to convince people towards a research degree and like the benefits of research when they can get like highly paid in a clinical degree? Yeah, well, that's a good question. And I can relate to the question because I come from Costa Rica. Costa Rica is a very small country. If you don't know where Costa Rica is located, Google it. We are a small country in Central America. We are only 5 million people. That's nothing compared to Pakistan. And still, we sometimes don't really have enough resources for research. Sometimes what you need to do, unfortunately, is that you can start doing research within your own country. So sometimes what you need to do is you go study abroad, United States, United Kingdom, Europe, another country, and then you come back to your country and you try to start with your knowledge. You try to start a group in order to do research. But this must be a joint effort of different parties, you know, not only researchers, but also the government, also universities. And I think a lot of people should be thinking about research now, because unfortunately, for several diseases,
there is no cure. So if you are a physician, if you are a neurologist, what are you going to say to someone with Huntington's disease, with amyotrophic lateral sclerosis, with Alzheimer's disease, Parkinson's disease? There is no cure. So we need more resources for research. So my advice to people trying to do research in Pakistan is one word: networking. And what does networking mean? This thing that we are doing today. We are gathering together. Abdul invited me. I'm from Costa Rica doing research in the UK. And now we are connecting people from all around the world, because science is multidisciplinary. It means we need a lot of people from different backgrounds, from different countries, and that is how science is made, by different people with different backgrounds. So my advice would be networking. Try to find funding from private companies, from public companies. Try to insist with the universities in order to have better courses or research courses. Open a lab, even if it's only to do very simple research. And then we can start growing and asking for people from different countries, to collaborate. So in my case, I will write my email on the chat. And then if you want to, ask me a question or try to establish a collaboration or something, I will be willing or happy to help as much as I can. So that's my email. And that's a way to say that I'm open to networking, which is something really important nowadays. So we can start alone. And there is this phrase from an African proverb that says, alone, we go faster, right? But together, we go further. So we can go far away if we are together. So people interested in research in Pakistan should, get together and try to do an organization, to try to look for funding, try to support or sponsor students, and try to look for, different initiatives that can promote science and research. Perfect. Thank you so much, Lewis. And it means a lot, man, for joining and giving us the time. Honestly, it means a lot. And yeah, as Lewis has mentioned, his email, anyone interested in neuroscience research, cancer sciences research, if I'm not wrong, Lewis has quite a background in molecular biology techniques as well. So you can ask everything about neuroscience research, molecular biology, oncology, any questions about research, and I'm sure he would definitely help you guys. And thank you so much, Lewis, for joining us today, because the rest in the talk will be like in my native language, so I just don't want to bore you all. Thank you so much, man. Thank you. Thank Bye. you. Bye. All right. Bye.